Today I am going to discuss, rather share with you a case who is 52 years old male having pain in the left knee for last 6 months, is unable to walk more than 1 to 2 minutes. These are the AP and lateral x-rays of the same patient. Whether HTO should be done or TKR should be done. Whether supracondylar osteotomy should be done or TKR should be done. And whether osteotomy is around the knee, that should be the most appropriate word instead of HTO or supracondylar osteotomy. There is history of correction of genu valgum at the age of 20 years. Now, femur is in varus, tibia is in valgus, FFD, fixed flexion deformity of the knee is there, and severe osteoarthritis of the knee also present. As you can see in the X-rays, that femur is in varus at the lower end by 31 degree, and tibia is in valgus of about 13 degrees. They are the opposite deformities, and the net result is varus of the knee. The CT scans, they have been done, and we have found additional information that FFD of knee is 24 degrees. So, sorry. Can one go for TKR and correct all the deformities in one go? Or supracondylar osteotomy to completely correct varus of the knee and FFD of the knee? Or supracondylar osteotomy to correct the varus, femur, FFD of the knee, and HTO, high tibial osteotomy to correct valgus, tibia, and 5 to 7 degree of FFD of knee can also be corrected at the level of the HTO, and later on TKR can be done. I opted for option 3. In these cases, TKR cannot be done until and unless the deformity is corrected. First, you have to correct the deformity, then the replacement can be done. And this is how we did. And at the end, the mechanical axis is in valgus and Fujisawa point. We are lateral to that with femoral valgus about 5 degree and tibial valgus of about 7 degree. These are the full length X-rays done about 2 years and 6 months later, the surgery. And we requested the patient to come to our hospital so that we can analyze what are the results. And that is what I am sharing with you. This is the letter. And there's no FFD now present. We did in this case supracondylar osteotomy and hexapod correction. Valgus of 30 degree and extension of 20 degree was done with in the supracondylar osteotomy. And at the HTO from valgus to varus 10 degree, and later on some correction was also done in the sagittal plane at the HTO level. These are the results 2 years and 6 months postoperatively. Prior to the surgery, he could hardly
walk few steps, that too in pain. After the surgery, there is no pain at all. Before the surgery, he was having pain even on resting. After the surgery, even on walking, he is having no pain. And he can walk up to 4 kilometers in one go in 1 hour without pain or tiredness. I never imagined that this can happen in such a severely osteoarthritic knee that the patient can be so comfortable with the osteotomies. It is miracle of the osteotomy. It is the miracle in which the mechanical axis in both frontal and sagittal plane, once it is settled, the patient can benefit a lot. These are the pictures. Their knee was not bending more than 10 to 15 degrees preoperatively, and you see knee bending postoperatively is more than 90 degrees. Initially, at the age of 30 years, once the valgus was corrected, it was corrected at the femur only, while the deformity was also present at the tibia. The deformity at the knee was overcorrected and it created varus at the knee. It also changed the obliquity of the joint line in the frontal plane. And you can see postoperatively, the obliquity of the joint line has gone and joint line is parallel with the ground. So, valgus knee doesn't mean deformity is at the femur. It is a myth. Earlier, we used to say valgus knee means femur is at fall, and if it is varus knee, it is tibia at fall. No, it is not true. The truth is, you have to evaluate in each and every case by analysis of the deformity, whether it is present in the lower end of the femur or upper end of the tibia or both, how much, at what level. Deformities then should be corrected at the bone or the bones which create the deformities. Like in this case, earlier deformity could have been done in a better way at the level of the femur as well as at the level of the tibia. Tibial deformity was not addressed, rather it was addressed at the level of the femur and also it was overcorrected. I think at that time, the knowledge about the deformities was not that deep as it is today. The osteotomies around the knee, they have many areas which are still undigged. I am doing supracondylar osteotomy or the osteotomies around the knee very frequently. And prior to surgery, in this case, I had no idea, no imagination that this patient with so much osteoarthritis in medial compartment, lateral compartment, patellofemoral compartment, we behave like this without going intra-articularly, and he will be able to walk without pain. I think there are many mysteries as we keep on going on the path of osteotomies around the knee. It will reveal many things. And earlier we used to say HTO
or TKR. I think the best wording should be OAK, osteotomies around the knee, which will include supracondylar with or without high tibial HTO, high tibial osteotomy. This is what this patient was called in our OPD, and the purpose was to analyze what happened. One thing. Second thing, to introduce to him all the patient who are undergoing Elizero correction, so that these Elizero patients, they can interact with them and can also have the views that they will also be okay, all right, one day, to enhance or to boost their morale. Sometimes we call this patient. बचपन में 18-20 साल की उम्र में टेढ़ा होना शुरू हो गया था। टेढ़ा होना शुरू हुआ, फिर क्या किया? फिर पीजीआई में ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन करवाया था। हाँ जी। फिर उसके बाद फिर 20 साल बाद फिर दर्द होना शुरू हो गया। दर्द शुरू हो गया। फिर उसमें क्या हालत हुई? ऑपरेशन करने की नौबत आ गई? हाँ जी, ऑपरेशन। क्यों? वो कहते हैं गोटा घिस गया, गोटा चेंज करवाना पड़ेगा। चेंज करवाना पड़ेगा। तो इतनी दर्द होती थी कि आपको चलना कितना कम हो गया था? 2 मिनट चलता था, दर्द होता, बैठना। 2 मिनट भी चलने से दर्द इतना होता था कि बैठना पड़ता था, और गोडा बदलवाने के लिए कहा था। फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर डॉक्टर साहब के पास आया। डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया। नीचे वाली लात भी सीधी कर दी, ये भी सीधी कर दिया। यहाँ भी इनके लगाया था, इधर भी लगाया था, टेढ़ी थी टांग। उसके बाद आपको इनकी वीडियो भी दिखाएंगे, फोटोज भी दिखाएंगे। तो उस बात को आज हो गए हैं करीब 2.5 साल हो गए। ऑपरेशन करके 2.5 साल हो गए। ऑपरेशन को 2.5 साल हो गए हैं। और अब क्या हालत है? बढ़िया है। 4 किलोमीटर चल लेता हूँ जी। 4 किलोमीटर बगैर रुके। बताओ। अब कोई दर्द नहीं है। हाँ। कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ मैं। चलता हूँ, जो खाना नॉर्मल खाना है वही खाता हूँ। डॉक्टर साहब की बहुत पहले कितना मुड़ता था? पहले बहुत कम इतना मुड़ता था। और अब इतना मुड़ता है। मुड़ना भी ज्यादा, सीधा भी हो गया। सीधा भी हो गया। कितनी देर खड़े रह सकते हो? अब मैं 2 घंटे तक खड़े रह सकता हूँ। 2 घंटे खड़े रह सकते हैं। पहले कितनी देर खड़े रहते थे? 2 मिनट या 3 मिनट। 2 या 3 मिनट। क्या होता था 2 मिनट खड़े होने? दर्द होने लग जाता था। दर्द होना शुरू हो गया। गोडा बदलवाने के लिए कहा था, लेकिन ये इस तरह का गोडा टेढ़ा था कि इस गोडे को बदल भी नहीं सकते थे। बताओ। बदल नहीं सकते थे। डॉक्टर साहब ने फिर अपनी ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया। गोडा बदला भी नहीं जा सकता था क्योंकि इतना टेढ़ा था। जब भी गोडा बदलना है तो सीधा तो होना चाहिए, सीधा होगा तभी बदला जाएगा। और टेढ़ा होगा, पहले सीधा करोगे फिर गोडा बदलोगे। तो हमने इनका ऑपरेशन किया था सीधा कर दे ताकि ये अपना गोडा बदलवा ले। लेकिन अब तुम्हें कोई दर्द नहीं दर्द। खूब चल रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो ये गोडा क्यों बदलवाएं? गोडा सीधा करने से कितना फायदा होता है, नहीं? कितना फायदा लगता है आपको? जो सोचा था यहाँ पे कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उतना हुआ या नहीं हुआ? 90% फायदा हुआ है। 90% का फायदा हुआ है। अब कहीं भी अभी जाने में, वो करने में कोई परेशानी नहीं होती है? आराम से चले जाते हो, कोई सोचते नहीं, दर्द भी नहीं होता। दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो, खराब होते जा रहे हो, या वैसे ही हो? नहीं, बेहतर होते जा रहा हूँ। दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो। ठीक है। शुरू में जब ऑपरेशन होता है थोड़ी दिक्कत आती है, बाद में ठीक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। दर्द को मेरे से भी होता है, आप लोगों को भी हो रहा है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। पर मेरे साथ थोड़ा, पर बाद में जो फीलिंग होती है, अब जिसको पता है कि इनका ऑपरेशन हुआ है, वो कहते हैं कि वो बाहरला बंदा नहीं कह सकता कि ये ऐसा था, पैर था। अब ये कहते हैं, अब ये खुद मेरा ब्रदर है, ये भी हैरान है कि पैर ऐसा सीधा हो सकता है। इसे भी नहीं उम्मीद होगी कि ऐसा सीधा। नहीं उम्मीद थी। और ये चंडीगढ़ छोड़ के यहाँ छोटे से शहर में आए, नहीं तो चंडीगढ़ में बहुत। नहीं, डॉक्टर साहब ने भेजा, डॉक्टर उन्होंने भेजा था मुझे, विश्वास करके भेजा था। थैंक यू। एक बार दिखाना। So this is a part of Elizero treatment.
where the patients, if they meet those patients who have earlier been treated, they get a boost. The kind of depression they have sometimes, while whether they will be all right or not, that gets removed. So this is part of Elizarov methodology to call such patient and have meeting one-in-one with those patients who are under treatment. And this is what another interview. नमस्कार जी, मेरा नाम कमल अरियाल है। मेरा घोड़ा 20 साल पहले खराब हुआ था। मैंने चंडीगढ़ में दिखाया था, तो चंडीगढ़ में मुझे डॉक्टर ने बोला कि घोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने गूगल में सर्च किया, तो डॉक्टर भोला साहब का मुझे वो मिला, एड्रेस मिला। इसलिए मैं डॉक्टर भोला साहब के यहाँ आया। आने के बाद मेरा उन्होंने ट्रीटमेंट किया और बहुत अच्छा किया। और मेरा घोड़ा घोड़ा चेंज करने को बोल रहे थे, डॉक्टर साहब ने घोड़ा बगैर चेंज करे इलाज कर दिया। इसलिए मैं आज ठीक हूँ। की टांग टेढ़ी थी क्या? मेरी टांग पहले टेढ़ी थी, बिल्कुल ऐसे कर्व बनता था। कर्व बनता था, उन्होंने बिल्कुल सीधी कर दी है। अभी बिल्कुल स्ट्रेट है। अब अब एक बार खड़े होके दिखा दीजिए। बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड, बैठ जाइए सर। अभी आपको चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले आप कितने देर चलते थे? पहले 2 मिनट चलता था तो मैं थक जाता था, अब 2 घंटे चलता हूँ तो नहीं थकता। चलने पे कोई दर्द तकलीफ नहीं नहीं आपको? होती है। मतलब आपको कंफर्टेबली आपको चला जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उस चीज के नहीं आ अंदर? रही। स्टैंडिंग में और आपके चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे आपको? दोनों टांगों पे बराबर वजन आ रहा है आ आपके? रहा है जी। दोनों टांगों पे आ रहा है। जी। वेरी गुड। आपका पोस्चर भी थोड़ा सही हो गया अभी? मैं पहले टेढ़ा था, कमर भी मेरी टेढ़ी थी, अब सीधी हो गई है। बिल्कुल सीधी हो गई है वो भी। अब तो सांस वास नहीं चढ़ता ज्यादा देर चलने पे, या थकावट नहीं होती, दूसरी टांग तो नहीं दुखती, ऐसा तो नहीं होता ना कुछ? नहीं दर्द करता। ना यू आर हैप्पी? हैप्पी। आपको क्या लगता है कि घुटना अगर चेंज करा लेते हैं, ये ट्रीटमेंट कराया, कौन सा सही था उसमें से? ये ठीक, ये सही था। ये सही था, ये डिसीजन सही था मतलब? ये डिसीजन सही था। ठीक है, चल। कैसे सर, किस भगवान को मना के आए थे आप? मैं शिव शंकर भगवान को मना के आया था। चलो, उनका भी थैंक यू करिएगा। उनका भी थैंक यू, डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Professor Leonid, who invented SUV hexapod, he has written in his book that these patients who undergo Elizarov corrections, preferably if they can go to whosoever is their mentor in the spiritual life or their god or goddess, take the blessing of that, then they have more endurance during treatment than without it. So most of our patients, once they come, I have made it a point that if they take some blessings from their gurus, mentors, or they have some kind of feeling or some kind of blessings or signals from their gods, then they have much more endurance and they can pass this time of difficulty in a much better way than without. And secondly, I never knew this patient. This patient was referred by one of my friends, Dr. Narendra Arora from Chandigarh. He had so much faith on me because he had seen few patients, and he said, no replacement. You first go to him, and whatsoever he says, you do it. And in spite of the so much financial constraint to this patient, he underwent these surgeries of supracondylar and high tibial osteotomy. And I am also very thankful to the God that he today has given me chance and I feel that
in such kind of severe osteoarthritic tri-compartmental with sagittal plane issues, they can also be benefited by the osteotomies. Another strength also came once I discussed this case on knee preservation group, WhatsApp group, and many stalwarts, they gave their suggestions, which were very valuable, especially Dr. Mangal Prihar sir, and I really, from the core of my heart, thank them. Especially in deformity correction center, correction surgeries, if you want to go ahead, you must have good mentors, good groups in which you can interact. You must have personal relationships with your mentors so that they can guide you. I'm really thankful to Dr. Mangal Parihar sir, and especially this group and many stalwarts who gave their suggestions. With these words, I have shared my happiness that osteotomies have many roles, many uh, dimensions still being explored. Thank you very much.